Welcome to this new series of videos on output questions. Okay, this particular video is going to focus on for loop and what is the benefit for you with this whole series and also this particular video. Number one, you will get to understand the basics of how for loop works. Okay, two, this will be a very good way to revise the whole topic because I'm going to look into the basics, some tricky questions, everything. Okay, third, this is going to really prepare you for any sort of MCQ output basic related question along with some twists which the exam is very used to giving in the paper. So stay tuned and look at this video till the end. You'll have this topic on your fingertips, and I'll make sure that you'll get full marks if you encounter any question from this particular topic. Let's get started. Pause this video and try to solve this question before looking at the solution. Now, in this, what are we doing? Creating a simple class, defining the main method, right? Then I've created a counter, taken a variable int count 0, right? Then there is a for loop. Okay, for loop initializes the variable I. The condition is I less than 5. Then we have two increment statements, I plus plus and count plus plus. Okay, then we have a print statement which is printing the count. Now for everyone, you some people might have straight away started कि I का सबसे पहले value will be 0, right? How does the loop work? How does the loop work? I'll tell you. I's first value will be 0. Then it will check. The check will be, is I less than 5? Yes, right? I is less than 5. Then we come inside the loop. How does the loop work? Inside the loop, first we initialize, right? पहले initialize होगा. Then we check the condition. Is the condition true? Yes, the condition for us is true. I is less than. Then I enter the loop. But in this case, is there anything to enter in the loop? No. For all my keen observer friends who were able to observe this particular semicolon mark, this loop does not have any body. ये जो system.out.println है, ये loop के अंदर नहीं लिखा है. ये loop यहीं खत्म हो चुका है. यहाँ पे कोलन है ना, जो ये loop यहीं खत्म हो गया. There is no body. तो ये print statement is actually outside the loop. It is not inside the loop because ये कोलन की वजह से. So अब क्या होगा, मेरा पहले तो ये loop पूरा चलेगा, तब जाके प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये लूप के बाहर है. ओके, तो अब लूप कैसे कैसे चलेगा वो हम एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले आई इक्वल टू 0. क्या कंडीशन ट्रू है? यस, हमने देख लिया. आई लेस देन 5 फॉर आई इक्वल टू 0. आई प्लस प्लस count plus plus, दोनों plus plus मतलब दोनों both have increased by 1. Then I has become, I'll write it down quickly, I will become 1, count will become again plus plus, count, I'm sorry, quickly rubbing it, count will also become 1. Both have increased by 1 because of this particular increment statement. Now both have become 1. Now again, since अब कोई body ही नहीं है, we go back and check. Is I less than 5? I क्या है? 1. Is 1 less than 5? Again my condition becomes true, right? ट्रू कंडीशन में क्या होता है, तब उसके बाद लूप की बॉडी चलने लग जाती है. बट कोई बॉडी ही नहीं है तो मैं वापस इंक्रीमेंट पे आ जाऊंगा. आई प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस, आई प्लस प्लस आई हो गया 2, काउंट हो गया 2. ठीक है, दोबारा से चेक होगा. नाउ बोथ इंक्रीमेंट के बाद चेक होगा. आई लेस देन 5? यस, आई इज अगेन लेस देन 5. यस, तो दोबारा से आई प्लस प्लस, क्योंकि अब आई लेस देन 5 है, बॉडी एग्जीक्यूट होती है, बॉडी ही नहीं है कोई लूप की, तो दोबारा से आई प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस. अब आई हो जाएगा 3, काउंट हो जाएगा 3. क्या इस केस में आई लेस देन 5? यस. देन फिर बॉडी एग्जीक्यूट, बॉडी है ही नहीं. देन दोबारा आई प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस. क्या इस केस में आई लेस देन 5 है? यस. दोबारा से आई प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस, फिर आई हो जाएगा 5 एंड count will also become 5, right?
क्या अब i लेस देन 5 है? अब जब मेरी i ये हुआ i प्लस प्लस एंड काउंट प्लस प्लस, ये i हो गया 5 और काउंट हो गया 5। अब जब मैं चेक करूंगा i लेस देन 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, इट इज नॉट i लेस देन इक्वल टू, इट इज i लेस देन। अब तो i इक्वल टू 5 हो चुका है, तो ये कंडीशन बिकम्स फॉल्स। तो अब मेरा ये लूप खत्म हो जाएगा, मैं लूप के बाहर आ जाऊंगा और तब आएगा प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट ln काउंट। काउंट क्या है? काउंट इज 5। So what is the output? Output is 5. Output is not compilation error, not 4, not 0, it's 5. Right? So what did we learn? We learned the basic working of the for loop. This I have already covered in one of my lectures, but it was good to revise the how does the for loop work. And since it had no body, no body in the for loop, that is why this command was not a part of the body, and it was only executed after the loop completely ended. This condition became false. That is when this outside print statement got executed. So yeah, now move on to the next question. Now let's look at this second question. इसमें क्या है? देखो, normal class created है, we have a class, we have a main function, public static void main, then we have again a for loop. This series is for for loop, that is why we are only going to discuss for loops. So इसमें I see there's an initialization of I variable which is equal to 0, a j variable equal to 5. What is the condition? Till when is this loop going to run? Till the time I is less than j, till then the loop is going to run. What are the increment and decrement? What is the change that is happening after the loop is run? I प्लस प्लस, i को 1 से बढ़ा दो, j माइनस माइनस, j को 1 से कम कर दो, then I check the condition again and then I see. इस केस में there is no colon, there is a loop का body. What is the body of the loop? I am printing. ठीक है, this is where loop starts, this is where loop ends. So there is a body. This print statement is inside the loop, right? What am I printing? I space j space. So basically I am printing the I variable का value, then a space followed by j variable का value followed by the space. Now let's do the dry run. How is this loop going to run? सबसे पहले ये एक, let me create an I value का column and a j value का column, and then I'll create a column of condition which will check the loop का condition, which is I less than j is the condition, right? And then the output. Okay, output screen में क्या है ये? I'll check all of these. I'll do the dry run. What happens initially when the loop is run? सबसे पहले I की value 0, j equal to 5. So I becomes 0, j becomes 5, right? And with this initialization, then we check the condition. ठीक है? After initialization, what happens? We check I less than j. Is 0 less than 5? Is 0 less than 5? Yes. तो condition क्या हुई? Condition is true for me. When the condition becomes true, I immediately enter the loop, inside the loop. ठीक है, I go inside the loop. Loop के अंदर आएगा and then I'll print system.out.print I space j space. So what is going to get printed? What is going to get printed for me? Output में क्या लिखा आएगा? I space, let me write the output in a different color. I space, basically 0, then followed by a space 5 and then followed by a space. ये space actually में दिखेगा नहीं, ठीक है? It's a space bar. That is good. Oh, I'm sorry, I missed it. It's not a space bar. It's a colon. पहले I और J के बीच में एक हाइफन है, not even a colon, एक हाइफन है, and then उसके बाद एक space है. Sorry, I missed that. So 0 followed by a hyphen, then 5 followed by a space. तो अब एक space पे, तो पहली बार क्या प्रिंट हुआ? 0 की वैल्यू I की वैल्यू which was 0 followed by a ये hyphen, then followed by a j का वैल्यू which is 5 and followed by a space. So this line gets printed in the first time. Then what happens? Notice that there is no ln statement in the print command. So the line is not changing. The next output will also happen in the same line. That is the significance of the ln statement. There is no
ln written in this print command. That is why the line won't change. That is one observation we had to make. Then once this has happened, then the body of the loop has been executed. Then we go to I plus plus and j minus minus. I की value, what does I की value now become? I plus plus means increase I by 1. It becomes 1. Let me keep it in blue only. It increases the value of I by 1 and decreases the value j minus minus. J minus minus decreases the value of j by 1. Now it checks. Once it decreases, now it checks again. I less than j. Is I less than j? Right? Is I less than j? Yes, it's true. If it's true, I come inside the loop and I print I plus space, I plus hyphen प्लस जे का वैल्यू देन स्पेस. सो अभी तक मेरा ये तो प्रिंट हो चुका था. दिस पोर्शन वॉज प्रिंटेड. देर इज नो लाइन चेंज. दैट इज वाई इसी के आगे मेरा प्रिंट होगा. वॉट वुड बी द आउटपुट? मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ. दिस हैज ऑलरेडी बीन प्रिंटेड फॉलोड बाय अ स्पेस विच वॉज हेयर. देन I am printing again I, which is now 1, and I am printing a hyphen. Then I am printing 4 followed by a space. ये मेरा प्रिंट हो चुका है. ठीक है. 05 स्पेस 14 स्पेस ये प्रिंट हो चुका है. तो अभी तक कौन कौन से आउटपुट पॉसिबल है मेरे? तीनों में यही है. 05 स्पेस 14 स्पेस 05 स्पेस 14 स्पेस 05 स्पेस 1. तो अभी आई कैनॉट से A, B और C. अभी आई हैव टू स्टिल डू अनदर रन. देन आई डू what happens after the command is printed. Again I do I plus plus j plus plus. I becomes how much? I becomes 2, and not j plus plus, j minus minus. J becomes 3. Increase by 1 and j is decreasing by 1. Again I check the condition. Is this less than 2 less than 3? Again it becomes true. Then what is printed in the same line? Again what is printed? 05 space 1 hyphen 4 space. तो print हो चुका था. Now I am again going to print I plus I is going to print what is I now? 2 hyphen 3, right? J की value is 3 and then space. तो 051423 got printed. Again after printing I plus plus j minus minus, I becomes 3, j becomes 2. Is this condition now true? No, it's false now. So the loop ends. I come outside the loop. So what has been printed? What is the output that I have got? 05 1 4 2 3. ये output आएगा. This will be the output. 05 1 4 2 3. This is the output. राइट वो स्पेस मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे डाला हुआ था. स्पेस में देखो खाली जगह प्रिंट होती है, कुछ प्रिंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे खाली जगह है. ओके तो ए इज द आउटपुट. नाउ वी हैव अवर थर्ड क्वेश्चन. क्लास डिफाइंड, main method defined. I have an I loop or a for loop with I equal to 0, I less than 10, I plus plus. For those who are now experienced, they should be, and who have seen my lectures, उनको ये loop देखते ही समझ आ जाएगा कि होना क्या है इस loop में. इसमें I की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जा रही है? 10 तक जाएगी. ठीक है. जब I की वैल्यू 10 होगी तो क्या ये लूप चलेगा? नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कंडीशन इज I लेस देन 10. इट विल ओनली वर्क फॉर I वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देन व्हेन, बिकॉज I is increasing by 1, I plus plus. Then when it becomes 10, the condition will become false. I is not less than 10, right? 10 is not less than 10. 10 is equal to 10. That is why the condition will become false. So the loop will end for I's value equal to 10. Right? The loop will run 9 times, and when I's value, the loop will run not 9 times, sorry, because 0 is also there. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loop will run 10 times from 0 to I की value 9. There are 10 times the loop will run. When I becomes 10, right? For the 11th time when I's value become 10, it will not run. Simple. This should be very clear. Now, inside the loop, I am checking if I double equal to 5, break. If I is double equal to 5, what is within the I's if statement? It says if I is double equal to 5, break, right? It breaks. Otherwise, print
इफ आई इज इक्वल टू 5 ब्रेक, अगर ये स्टेटमेंट कब चलेगा, जब आई की वैल्यू 5 होगी तब, वरना प्रिंट तो होगा ही, आई प्रिंट होगा हर बार. वाई इज दिस हैपनिंग, बिकॉज इन केस ऑफ जावा इफ देर आर नो ब्रेसेस, जैसे इफ कंडीशन के बाद कोई ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस नहीं है, तो जावा टेक्स ओनली द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज द ब्रेक स्टेटमेंट, विच इज द ब्रेक कमांड, ओनली दैट इज विद इन दिस इफ कंडीशन. तो इस इफ के अंदर क्या है, खाली ब्रेक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नहीं है सब के इफ के अंदर. ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई लूप के अंदर है. देखो ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है आई लूप और यहाँ खत्म हो रहा है. ठीक है, ये इफ के अंदर का कोई ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस नहीं है, तो इसमें खाली उसका अगला लाइन जो कि ब्रेक है वो ही है, ऐसा जावा कंसिडर करेगा. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. जिसको पता है ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक का क्या यूज होता है लूप में, उसको तो समझ आ गया होगा डायरेक्टली कि क्या आउटपुट आने वाला है. बट आई विल टेल फॉर अदर नॉन इनिशिएटेड फोक्स जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोज नहीं देखी हैं. लेट मी टेल यू. सबसे पहले आई की वैल्यू है 0. ठीक है, द कंडीशन इज गोइंग टू बी आई लेस देन 10, राइट. कंडीशन इज आई लेस देन 10, right, and then I'm going to write the output condition is I less than 10, I की value 0, is I less than 10, condition is true, right. I come inside the loop. If I is double equal to 5, is I double equal to 5, no. तो if condition not executed, if के अंदर क्या था, break, तो ये नहीं चलेगा because I is not equal to 5. What is then executed? This system dot out dot print I, the value of I gets printed. This is within the I loop but not within if condition. That is why this condition runs. And what is the output? What do I see in the screen? I see a 0 in the screen. Then we have ended the loop. The loop ends after the print statement. Then I go back, I plus plus, I becomes 1. Is the condition true? Is 1 less than 10? True, right. I come inside the loop, I check, is I equal to 5? nahi, I is not equal to 5. then print, simply print. तो 0 1 प्रिंट हो गया, राइट. आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 2, राइट. क्या ये ट्रू है? ट्रू है. 2 इज लेस देन 10, राइट. इफ कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है? क्या आई इक्वल टू 5 है? नहीं. तो क्या करना है? प्रिंट कर देना है 0 1 2. तो ये यही चलता रहेगा. कब तक चलेगा? आई की वैल्यू 3 होगी, इट विल बिकम ट्रू, राइट. इफ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड तो 1 2 3. आई की वैल्यू 4, अगेन ट्रू. इफ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, आई इज नॉट इक्वल टू 5, अभी 0 1 2 3 4, देन आई बिकम्स 5. इफ ये अब देखते हैं क्या होगा. क्या ये कंडीशन ट्रू है? आई लेस देन 10 है, हाँ ये तो अभी भी ट्रू है. तो मैं लूप के अंदर आऊँगा, राइट. ये कंडीशन तो अभी भी ट्रू है, लूप के अंदर आए. अब उसने चेक किया i इक्वल टू 5 है क्या? हाँ भाई, अब तो i इक्वल टू 5 है. देन दिस इफ कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड एंड आई कम इनसाइड द इफ. इस इफ के अंदर आई टोल्ड यू देर इज अ ब्रेक. दिस द वेरी नेक्स्ट लाइन, अगर कोई ब्रेस नहीं होता देन द वेरी नेक्स्ट लाइन is what is inside that. Okay, if के अंदर is a break. So what does break do? Break ends the loop immediately. Okay, after the break the loop finishes. I come outside the loop, so the print command is not executed. ब्रेक होते ही प्रिंट कमांड इज नॉट एग्जीक्यूटेड, क्योंकि लूप से ही बाहर आ जाऊंगा मैं. तो फॉर आई इक्वल टू 5 वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी क्योंकि मैं लूप से ही बाहर आ जाऊंगा. एंड व्हाट इज द आउटपुट दैट आई विल गेट? 0 1 2 3 4 इज व्हाट वाज प्रिंटेड अभी तक. सो द ए इज द राइट आंसर. 5 अगर कोई कर देता, 5 वाला प्रिंट नहीं होगा बिकॉज when i's value is 5, I come out of the loop. The print command is not executed. So 0 1 2 3 4 is the answer. Next output question. I'm going to give you so many output questions that all your concepts are going to get revised. सारे concept भी revise हो जाएंगे, for loop के भी master बन जाओगे, output तो आ ही जाएगा तुम्हें, and you'll be the best at for loop. Next series will be while, do while, functions, string, handling, arrays, सबके we are going to cover the output questions. So now
let's focus on this one. What is this loop? I'm going to do is faster because abhi basic concept hamare should have been clear by the first 2-3 questions. Ab I am going to do this very fast. What I have is a main function, within this a for loop I का देखते ही पता लगना चाहिए it will run for I value 0 1 2 3 4. Why did I say that? पहली value 0, increment is 1, so it is going to run for 0 1 2 3 4. How many times? 1 2 3 4 5 times it is going to run. The sixth time, when I becomes 5, the condition will become false. I is not less than 5, so it will not run. But when the loop ends, what is the value of I की वैल्यू 5 पे लूप एंड होगा, समझ रहे हो? तभी तो कंडीशन फॉल्स होगी. आई लेस देन 5, फॉर आई इज वैल्यू 5 द कंडीशन विल बी फॉल्स. ठीक है, दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग जो लूप में हमें पता होनी चाहिए, ये तो बेसिक ही है बल्कि. सो इट विल रन फॉर आई की वैल्यू 0 1 2 3 4. आई की वैल्यू 5 पे द लूप एंड्स. दैट इज द बेसिक. दिस आई नो. देन आई हैव एन इनसाइड द लूप इफ आई डबल इक्वल टू 2 continue. If I double equal to 2, continue is a similar statement, loop controlling statement like we had in the previous question. Break में it comes out of the loop. Continue के केस में it goes to the next iteration. It goes immediately to the next iteration. Continue के बाद जो भी लाइनें लिखी हो लूप में वो नहीं एग्जीक्यूट होती, it goes to the next iteration. ब्रेक के बाद जो भी लाइनें होती हैं लूप में वो नहीं एग्जीक्यूट होती, वो लूप के बाहर आ जाता है. ब्रेक में बाहर आ जाता है, लूप एकदम खत्म. कंटिन्यू में वो लूप अगली आइट्रेशन मतलब आई प्लस प्लस पे चला जाएगा. ये बेसिक है इसमें जानने का. अब जल्दी से इसमें क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा वगैरह वगैरह देखते हैं. आई कंडीशन ऑफ, यहाँ पे लूप आई लेस देन 5. अभी मैं यहाँ पे भी एक और कंडीशन का बना रहा हूँ, कंडीशन ऑफ इफ स्टेटमेंट आई डबल इक्वल टू 2. क्या वो, सॉरी मेरी राइटिंग के लिए, बट देन आउटपुट. ठीक है, आउटपुट. सो बेसिकली अभी सबसे पहले आई की वैल्यू है 0. मेरा कंडीशन चेक हुआ, क्या आई लेस देन 5 है, क्या आई लेस देन 5. आई एम सॉरी इसको, अरे यार Okay, now let's jump on to the next question. अभी तक our basics are now clear. फॉर लूप मैंने आपको चला चला के बता दिया कैसे चलता है, हमने अलग अलग स्टेटमेंट देखे. अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा. ये फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये फॉर लूप चलेगा आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 पे. जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्यों बढ़ रहा है ये एक एक से? क्योंकि आई प्लस प्लस है, इंक्रीमेंट एक का इंक्रीमेंट है, एक 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 करके बढ़ेगा. देन व्हेन आई बिकम्स 5, दिस कंडीशन विल बी फॉल्स. इज 5 लेस देन 5? No, 5 is not less than 5. 5 is equal to 5. So this condition becomes false. So this will run for i's value 0 1 2 3 4. How many times? 5 times it is running. For i's value equal to 5, it will terminate. So when we come out of the loop, i's value will be 5 and the loop would have stopped. That is the basic understanding जो हमको, which we should know. Inside the loop we have an if command. If double equal to 2, continue. What is continue is another loop controlling statement like break. For break, what happens? We come immediately outside the loop like we saw in the previous example. If this was a break, we come immediately outside the loop. Anything after the break is not executed. Right? Similarly, in case of continue, we don't come out of the loop. We go to the next iteration. We go to the next iteration. That is, we go to I plus plus. Any statement after continue is not executed. It's just like break. Here we'll immediately jump to I plus plus. That is the basic आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. Now let's create a table. I condition, सबसे पहले I'll write the condition of the for loop I less than 5. Okay, then I'll write the condition of if statement. I'm also writing that this time too. Then the output. Okay, so now initially I start with i's value equal to 0. Condition I less than 5 is true.
then I come inside the loop, right? I0, I check I less than 5, I come inside the loop. If statement I check, is I double equal to 2? No, this is still false. Then what is within the if statement? Just in the previous question we discussed, since it does not have curly braces, we have only the next statement, that is continue inside this if. This print is still inside I, the for loop. So if is not executed, so continue will be skipped, and what is printed? I and a space. So I value, which is 0 and a space, is printed. Now I go to the next iteration, I plus plus. I's value becomes 1. It checks, is I less than 5? Yes, it's true. I check, is I double equal to 2? No, false. So what happens? Again, the continue statement is skipped, which are because it's within the if. Print statement is executed, print I. So 0 space was already printed. I print now I 1 and space. This was now what's gotten printed. I loops ends and I plus plus again. It becomes true. Is 2 less than 5? True. Now condition for the if statement becomes true. If I is double equal to 2i, तो 2 हो गया है, then this condition becomes true. It says continue. It says continue. So once it says continue, it immediately jumps to the increment, to the next control. It jumps to the next iteration. Continue के बाद it immediately goes to I plus plus. The next statement of print is not executed. तो इसमें कुछ print ही नहीं होगा I की value 2 पे. It goes to next and it becomes 3, right? ये then for I value 3 I check, is I less than 5? True. Is condition then I check the if statement. I come inside the loop, I check I double equal to 2? No, now it's 3. So this again becomes false. And now I get the print statement, because this print statement is inside the loop but outside the if. एंड पिछली बार कंटिन्यू हो गया था, तो ये उसके बाद का नथिंग इज एग्जीक्यूटेड इफ आई एनकाउंटर अ कंटिन्यू और अ ब्रेक. बट दिस टाइम दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो वी डोंट गो टू द कंटिन्यू, वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई विच इज 3 and space. So 0 1 was already printed. I now print a 3 and a space. Now it's pretty straightforward, right? अब ये if तो कभी true होगा ही नहीं, क्योंकि आई अब 2 थोड़ी हो जाएगा दोबारा से. आई अब क्या होगा? 3, देन इट विल बिकम 4, देन आई विल कम इनसाइड द लूप. बट फॉर 5 इट विल नॉट कम इनसाइड द लूप. सो व्हाट विल बी द आउटपुट? आई एम डायरेक्टली राइटिंग. ये आपको अब तक आ जाना चाहिए. 0 1 ऑलरेडी गॉट प्रिंटेड, 3 will be printed, then 4 will be printed, right? But then when I का वैल्यू becomes 5, राइट, तो 5 लेस देन 5 तो नहीं होता है, तो ये नहीं होगा, तो लूप खत्म हो जाएगा. तो 0 1 3 4 इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन. Next output question for you, very quickly. Next output question, now what we see is same. We have a class main function, then we see bhai there are 2 for loops. This is a condition of nested loops, a loop within a loop. There's an I loop, there's a J loop, and there's some print statement, right? I loop starts from here, right? I loop starts from here and it's ending over here. J loop start here, ठीक है, because the loop the J loop starts here, J loop ends here. I loop starts here, I loop ends here. This is what is the first observation. What is going to happen now in this? ठीक है, let's give it a try. The best way to solve this is through a dry run. That is what we are going to do. I की वैल्यू क्या होगी, J की वैल्यू क्या होगी, है ना? And then I'll write I loop का condition. I loop condition is I greater than equal to 1. J loops condition is J greater than equal to 1, right? And then I am going to write the output. This is how we are going to check what is going to be the output. सबसे पहले मैं आऊँगा main function, then I come to the for I loop, right? I becomes for I equal to 3, right? I equal to 3. So what is the initial value of I that we have? Initial value of I that we have is 3. Okay, then I greater than equal to 1. Is I greater than equal to 1? Yes, this condition is true.
Okay, I equal to 3, I greater than equal to 1. Yes, then I come inside the I loop. What is inside the I loop? I loop के अंदर क्या क्या है? ये सारा सामान is within the I loop. For loop सबसे पहले execute होगा. दूसरा for loop wherein I have j equal to I, j equal to I, j becomes I. What does j become? J becomes 3. J equal to I, j condition is j greater than equal to 1? Is j greater than equal to 1? Yes. Is 3 greater than equal to 1? Yes. So this condition is also true. So what will happen is I'll come inside the j loop. J loop के अंदर there's only one command which is print j. J loop starts here, J loops end here. J loop के अंदर there's only one command which is printing j and a space. Printing j and a space. So since j loop condition was met, I come inside the j loop and I print j plus एक space. Okay, so what gets printed? 3 followed by a space is printed. J का value is 3, right? It gets printed. Then the j loop ends. But since we are inside the j loop, पहले तो j loop चलेगा ना पूरा. It will execute completely. So j loop ends and I go back to the j loop का decrement, which is here. I go to j minus minus. J becomes 3. Sorry, j becomes 2 now. J minus minus. J becomes 2 now. Then I check again the j loop ka condition. What is the j loop ka condition? J greater than equal to 1. Is j greater than equal to 1? Is 2 greater than equal to 1? Yes. Again I come inside the j loop. Inside the j loop there is this command print j plus space. So I'll print 2 and a space. 3 and space was already printed. Now I print 2 and a space, right? And then what happens is I go back to this j loop ends. I go back. How long will this continue? अभी j loop के अंदर हम रहेंगे ना, क्योंकि j loop है एक. हम i के अंदर हैं, बट i के अंदर भी हम j के अंदर हैं, तो वो j तो चलता रहेगा. We will keep executing j till this condition of j fails. Only then we'll be able to move out of this brace of j loop. So now j minus minus, again j minus minus after this. What happens to j? It becomes 1, right? And then it checks, is j greater than equal to 1? Is j greater than equal to 1, right? That is what we are checking. Yes, because 1 is equal to 1. J ki current value is 1. 1 is equal to 1. That is why it's again true, right? And then we come inside the loop again, j loop, and I print j plus space. So basically 1 plus space is now printed. So we get 3 space 2 space 1 space. This is something which has gotten printed abhi tak, right? Then the loop ends. I go here, j minus minus. J becomes 0. But now is the j condition true? J condition is j greater than equal to 1. No, j condition is false. So I come out of the j loop now. Now this print command will not be executed because this is within the j loop. अब j loop चलेगा ही नहीं, तो this command is not. I come out of the j loop. यहाँ पे j loop के बाद, इसके बाद I print, simply print what is this print statement doing? There's nothing inside it, but it's changing the line. It's not printing anything, but since it has an ln, it's changing the line. So what has happened after this is 3 2 1 space, but अब लाइन चेंज हो चुकी है उस दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से. अब लाइन चेंज हो चुकी है ln की वजह से. नाउ दिस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद व्हाट इज दिस? दिस इज द एंडिंग ऑफ द आई लूप, राइट? एंडिंग ऑफ द आई लूप. तो ये आई लूप खत्म हो गया. अब आई लूप के नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाऊंगा ना मैं. आई लूप भी तो लूप क्यों बोलते हैं उसे, वो बार बार चलेगा. तो ये खत्म होने के बाद अब मैं आई लूप के नेक्स्ट आइट्रेशन में जाऊंगा. यहाँ आई लूप खत्म हुआ, मैं अगली उसमें गया, आई माइनस माइनस. आई की वैल्यू क्या लेके आती थी? 3. अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू विल नाउ बिकम 2, राइट? आई की वैल्यू नाउ बिकम्स 2 एंड इट चेक्स इज आई की वैल्यू बिकम्स 2 and then it checks, is 2 greater than equal to 1? Is 2 the new, ये वाली condition is greater than equal to 1? Yes, it's greater than equal to 1. Yes. Then I come inside the I loop. I come inside the I loop and then j will run. What is the new value of j? J becomes I. J equal to I. J की value अब हो जाएगी 2. I की value जो थी, right? Because that is the initialization. Then I'll keep checking j's value. Is j greater than equal to 1? Is 2 greater than equal to 1? Yes.
अगर 2 greater than equal to 1 है, then I come inside the loop, I print j's value again, j and a space, 2 and a space. So I can see what will the output. 3 to 1 was already printed. Now 2 and a space has been printed in the next line because the line got changed, if you remember. Then again j minus minus, j becomes 1. Is 1 greater than equal to 1? j का statement change होगा, yes. Then 3 2 1 2 1 print हो जाएगा. Then j का value हो जाएगा 0. Is j greater than equal to 1? No. तो I will come out of the j loop. I will come out of the j loop. I will print the line change, right? I'll go to the next line. So 3 2 1 2 1 and then line will change, right? अब I minus minus, I का वैल्यू हो जाएगा 1, है ना. I minus minus, फिर मैं उसके अंदर आऊँगा, j का वैल्यू भी 1 हो जाएगा. इस ये वाला कंडीशन ट्रू. इज j ग्रेटर देन इक्वल टू 1? इज 1 ग्रेटर? यस. आई कम तो व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटपुट. मैं बार बार सेम चीज़ नहीं बता रहा. 3 2 1 2 1 1, ये आउटपुट होगा. ऐसे एक ट्रायंगल के फॉर्म में आउटपुट आया. 3 2 1 2 1 1, ये आउटपुट है इसका. थोड़ा सा ट्रिकी था, बट जिसको नेस्टेड लूप्स आते हैं उसको ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा. ये मैंने भाई बहुत डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से, बहुत ही घोट के आपको बताया है अपनी एक वीडियो में. तो ये मैंने स्टिल ट्राई किया इसमें टू गिव अ लॉट ऑफ डिटेल ऑफ हाउ द नेस्टेड लूप रन. इफ देर इज़ एनी स्लाइट कन्फ्यूजन दैट यू हैव, विजिट माई ओल्डर वीडियो फॉर लूप एंड देयर दिस बेसिक आई हैव टॉट मल्टीपल टाइम्स. तो आपको फॉर लूप डिटेल में आ जाएगा, बट दिस इज गोइंग टू बी द आउटपुट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.